इसी बारे में थोड़ा-सा और बढ़ते हुए सेक्स एजुकेशन एंड सेफ सेक्स ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आज भी कोई बात नहीं करता है, चाहे एडल्ट्स हों, चाहे टीनेजर्स हों। सो आपको स्कूल एजुकेशन तो कवर करता ही है, इसके अलावा कहीं पर मतलब आपको लगता है कि उन्हें और ज़्यादा इसके बारे में स्कूल्स में भी इसके बारे में और ज़्यादा बताना चाहिए ताकि कॉन्ट्रासेप्शन उनको पता चले दैट कुछ लोगों का कहना है कि उससे ना वो बोल्ड होके और ज़्यादा सेक्स की तरफ जाएँगे, बट एटलीस्ट प्रोटेक्टेड तो रहेंगे। तो इसके बारे में हाँ आपका जी। क्या ओपिनियन है? तो इट इज़ अ फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आजकल अर्ली अर्ली हो रहा है, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर देयर, बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, बट हमें एक्सेप्ट करना है, हम ये बिलीफ में ना रहें कि हमारे टाइम वाली बिलीफ कि ना प्री मैरिटल सेक्स नहीं होगा, होगा, इट विल बी देयर। 80% ऑफ किड्स दीज डेज विल हैव सेक्स बिफोर मैरिज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड एक्सेप्ट करेंगे तो इजी होगा, एक्सेप्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स विल कम स्टूडेंट्स आई मीन चिल्ड्रन विल कम आउट एंड टेल अस देयर प्रॉब्लम्स। ओपीडी में व्हेन आई सी गर्ल्स, most of them who are not married, 17, 18, 19, 20, they're all sexually active. And one thing as a gynecologist, I believe we have to be is we have to be less judgmental. Not only as a gynecologist, as a Yes. parent, as a teacher, as a senior, anybody, as a person, we have to stop being judgmental. कि ये गलत है या ये what have you done, or it's happened, they come with an infection, they come with pregnancy, unwanted pregnancy. हमें instead of lecturing them कि what have you done, you have to accept it and you have to guide them. वो तभी ओपन अप करेंगे अगर उनको राइट, इफ दे हैव द राइट पीपल। तो आई फॉलो अ लॉट ऑफ forums ऑन रेडिट, ऑन कोरा एंड ऑन इंस्टाग्राम, एंड वहाँ पे मेनी गर्ल्स, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स, वो यही पूछते कि हमें कोई नॉन जजमेंटल गायनोकोलॉजिस्ट बताओ, है ना। एंड वो क्राउड सोर्स करके दे हैव एक्चुअली मेड लिस्ट्स ऑफ नॉन जजमेंटल गायनोकोलॉजिस्ट इन एवरी सिटी। And I chanced upon this on some forums and I realized कि ना they don't, and I spoke to some of these girls and I realized कि ना actually बहुत judgmental, many of us are actually very judgmental unknowingly. Maybe I have also done this, but unknowingly we need to, now we need to accept that this is part, that times have changed, generation gap इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये हमें accept करना बहुत ज़रूरी है। And girls should, we should be able to tell them कि family planning, नॉट फैमिली प्लानिंग, एक्चुअली वी वुड कॉल इट कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे आपने बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बहुत जरूरी है, सेफ सेक्स बहुत जरूरी है, हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बिकॉज ये तो होना ही है, दे आर गोइंग टू हैव सेक्स, वी कांट स्टॉप इट। तो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स के लिए एक मदर एंड बॉयज के लिए उनका उनके फादर या एल्डर सिबलिंग्स शुड टॉक टू द चाइल्ड अबाउट सेक्स इन आफ्टर अ पर्टिकुलर एज? आजकल की डेट में 13 पे टीनेज नहीं आता है, उसकी प्री टीन 10 जो years है पहले। उसमें भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे रखते हैं। तो आपको क्या लगता है मदर या एल्डर सिस्टर शुड बी द वन टू इनिशिएट So दिस एजुकेशन? it is, I think, ना a joint discussion, कोई इसमें, even if the father is involved, it is a good thing, everybody should be involved actively समझाने में। ये नहीं है कि father son को समझा रहा है, mother daughter को, it should be a joint family interaction, everybody should be involved। कोई भी queries, कोई भी doubts हो, किसी के पास भी बच्चा जाके पूछ सकता है, अपने फैमिली में, अपने रिस्पॉन्सिबल जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं। एंड आजकल बहुत सारा लिटरेचर है, बुक्स अवेलेबल है विच एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे। on Instagram, on social media, there are very good social media accounts. For example, like Dr. Cuterus, who is a gynecologist, and she explains things in a very simple, very friendly, very non-judgmental way. So there are a lot of, but there's a lot of misinformation. So you should know the right things, the right people to guide you, and that is our job as a parent. And I'm a parent myself. As a parent, मैंने अपने माइंड में चॉक आउट किया हुआ है कि व्हेन माय डॉटर रीचेस दिस एज, दिस इज हाउ आई विल डिस्कस थिंग्स विद हर। सो बहुत जरूरी है हमें ये। मुझे याद है एज ए व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, माय मदर जस्ट गिव मी अ मैगजीन एंड शी इज लाइक, इसमें से पढ़ लो अबाउट पीरियड्स एंड सेक्स एंड एवरीथिंग। एंड व्हेन आई हैड डाउट्स, आई वाज टू स्कैर्ड टू आस्क हर,
but times have changed. हमें ना, so I don't want that mistake to be repeated. As a mother, I want कि my child should be able to ask me, कुछ भी doubt हो mind में पूछ सकता है, या फिर जिससे भी आप ना, मतलब it should be a joint, should be a very healthy family atmosphere in discussing these things, so the child doesn't get scared and does something wrong. Okay, so that's very or important. learn it from the wrong source, you know. Yes, learn it from the wrong source. Yeah.